बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन के ऊपर है और इसमें हम लोग बेसिकली थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन जो है और उसको जो है हम लोग देखेंगे। The goals for this modules are that we will define and distinguish between point estimates and point estimators. So जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट हम किसको कहते हैं और पॉइंट एस्टिमेटर हम किसको कहते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक गुड पॉइंट एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेट को शो करती हैं, जिसमें बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: अनबायस्डनेस, मिनिमम वेरिएंस, मीन स्क्वायर एरर, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड रोबस्टनेस। ये हम लोग बेसिकली आगे जब हम कवर कर रहे होंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। और फाइनली विल डिस्कस के कैसे हम लोग प्रिसिजन ऑफ एन एस्टिमेटर जो है उसको क्वांटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड एरर। ओके, so let's start. Little bit of review of key statistical concept. ये स्लाइड आप पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने लेफ़्ट साइड के ऊपर ये ब्लू बैकग्राउंड के अंदर वी आर शोइंग अ पॉपुलेशन, सम पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ इंडिकेट हुआ हुआ है कि populations have parameters about which we want to learn, like mu, sigma square, p, theta, और हम population के parameters के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, जबकि we almost never have actual population real world के अंदर। what we have is sample, or which is a subset of a population. So ये सबसेट हमें कैसे अचीव होता है? We get the data, we do some kind of an experiment, or we observe the population, or we take a survey, and that's how we get a sample. Sample के अंदर जो चीज़ें, जैसे पॉपुलेशन में पैरामीटर्स होते हैं, तो सैम्पल के अंदर स्टेटिस्टिक्स होती हैं, like they are the functions of the observed data, जो भी डाटा हमने ऑब्ज़र्व किया है, which is a subset of the whole population. So they are called statistics, like x bar, median, x tilde, s square, sample, variance, theta hat या p hat, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो है वो प्रोसेस है इसके बाद का। एक प्रोसेस है जो कि हमने यहाँ से इस साइड पे देखा, जो कि बेसिकली गेटिंग द सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो कि लेफ़्ट टू राइट इस स्लाइड के अंदर जो प्रोसेस है, जिसमें हमें सैम्पल मिला और सैम्पल की हमने स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो निकाल लिया। अब उन स्टैटिस्टिक को सामने रखते हुए we try to infer something about the population. So this is what we call as statistical inference. So it is the process of making an estimate, prediction, or decision about a population based on a sample. Okay, so हमारे पास हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, ओके, और उसमें से हम लोगों ने कुछ स्टेटिस्टिक निकाले। अब इन स्टेटिस्टिक के सामने रखते हुए हम कुछ इन्फर करना चाहते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, उसके पैरामीटर्स के बारे में। ओके, सो इस चीज़ को स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बोलते हैं, और 3 चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं।
statistical inference के अंदर. One is the estimate, the second is testing a hypothesis, and the third is doing some kind of a prediction about the population. So ये चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो फर्स्ट है estimates, उसके बारे में हम लोग, उसके अंदर भी हम लोग point estimate के बारे में देखेंगे. So we use statistics to make inference about parameters of a population, and secondly to assess how good or reliable our inference is. ना सिर्फ ये कि हम inference निकालना चाहते हैं about the population, infer करना चाहते हैं from our statistic about the parameters of a population, but at the same time हम quantify करना चाहते हैं कि जो हमारे statistic हैं वो कितने अच्छे या कितने reliable हैं. Okay, तो which will tell us कि हमारी जो inference है वो कितनी बेहतर है, कितनी reliable है about the population. So statistical inference जो formally है वो, this is a field, the field of statistical inference consists of those methods which are used to make decisions or draw conclusions about a population or distribution. Okay, these methods use information contained in a sample. Okay, so information which is contained in a sample from the population or distribution in drawing conclusions. So हम लोगों ने basically use किया information, using the information which is contained in a sample. The sample is drawn from the population or distribution in drawing the conclusions about the population parameters. दो मेजर एरियाज़ हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन के अंदर जो है हमारे पास बेसिकली पॉइंट एस्टिमेशन है जो कि चैप्टर 6 जो अभी हम रीड करें अपनी बुक का. द सेकेंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज़ बेसिकली द इंटरवल एस्टिमेशन which we will study in the next chapter or the next section. And the other thing is statistical inference के अंदर is called the hypothesis testing, which we will see inshallah in chapter number 8. So in current chapter we'll discuss point estimation or the best guess, and in today's lecture we will cover this whole. In the next inshallah और जो next lectures हैं वो interval estimation जो कि chapter 7 का topic है, और hypothesis testing जो कि chapter 8 का topic है, वो उनके ऊपर होंगे. So statistical inference में हम लोग क्या करते हैं? So statistical inference में जो हमारा प्रॉब्लम है जनरली वो इस तरह से होगा कि we'll have a simple, maybe we have a simple random sample of the data. Okay, so we have some sample like simple random sample का मतलब है IIDs, or we want to use it to estimate a population quantity or a parameter of its distribution. Okay, so this is the kind of problems that we generally will be facing for statistical inference. In point estimation जो हमारा टॉपिक है इस मॉड्यूल का, उसमें जो हम estimate लेंगे about the parameter of a distribution, the estimate is going to be some kind of a single number, right? So it will be just a number because that's why it's called a point estimate. Like for instance, a number like 24.5.
जबकि जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह जिस तरह से होते हैं, उसके अंदर विल बी हैविंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, लाइक फॉर एग्जांपल we'll be having a range from, let's say, 23.1 to 25.4. Okay, so next chapter के अंदर, next module में we'll be concerned with a range of values, a range, but in this chapter, in point estimation, our concern is about a single value. So whatever will be coming out, or whatever estimate that we'll be having, would be a single number. However, the issue is that we often have lots of possible estimate for a population parameter. For example, अगर हम expected value of mu of x देखना चाहते हैं कि what is the best estimate of expected value of a random variable x. So for mu of x, let's say, so it can be x bar or x tilde, like mean of a sample or the median of a sample. So which one to use? So this is the problem, or this is the dilemma. And under circumstances, let's say, yeah, which one would be better, or in the long run, which one would be the better. So इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग बेसिकली इस चीज़ को एड्रेस करेंगे कि which or what kind of characteristics make a point estimate, make a particular point estimate a good estimate. हम किस चीज़ को हम समझेंगे कि वो हमारे पास वो एक बेहतर जो है पॉइंट एस्टिमेट जो है हम उसको कंसिडर करेंगे. ओके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट एस्टिमेट जो है इट्स स्टैटिस्टिकल टर्म for an everyday activity, which is all about having an educated guess about a quantity which is unknown. Okay, so we have a quantity which is an unknown quantity, and we want to make a guess about it, and we want to make an educated guess about it. Okay, so educated guess about something which is unknown, but we have some information available. We don't have the total information available about it, otherwise it would not have been unknown, but we have some kind of information about it. Okay, so with that little information, we want to make an educated guess about that particular unknown quantity. Some more definitions. So point estimate of a parameter theta, it's a population parameter, is a single number that is a sensible value for theta. ठीक है, so educated guess हमने पिछले स्लाइड में कहा, now we are calling it as a sensible value. So point estimate क्या है कि किसी भी unknown जिसको हम यहाँ पे theta के तौर पे डिनोट कर रहे हैं, which is a population parameter. So point estimate is a sensible value for theta, or an educated guess about theta. It means that it has to be some numerical estimate of theta, and this is important that the theta is a generic term used for a parameter. So theta can be any parameter, or population parameter. It can be x bar, it can be mu, or mean, population mean, or the population standard deviation, or the proportions, or anything else. So theta को हम यूज़ करेंगे किसी भी जनरल पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पे डिनोट करने के लिए. पॉइंट एस्टिमेट जो है, it is usually obtained from statistic which is calculated from a sample. So this is important कि पॉइंट एस्टिमेट जो है उसको लिए यूज़ करेंगे हम लोग कोई स्टेटिस्टिक to calculate from the sample, और statistic को हम point estimator बोलते हैं. Point estimator basically is representation, or it's a formula. Okay, so formula which is defining a statistic, because statistic जो है वो भी जब तक कि observe ना हो जाए, डेटा कलेक्ट ना हो जाए, डेटा ऑब्जर्व ना हो जाए, तब तक एक रैंडम वेरिएबल होती है. सो विच इज़ रैंडम वेरिएबल विद सम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट्स कॉल्ड अ पॉइंट एस्टिमेटर, एंड इसको हम फर्दर भी अभी डिफाइन करेंगे. यूजिंग
using the hat notation, we will denote the point estimator as theta hat. Okay, so theta hat, हमने theta use किया था for population parameter यहाँ पे, और theta hat हम use करेंगे for point estimator. For example, we might use x bar to estimate mu, so in this case mu hat would be our x bar. So mu hat का मतलब ये है कि it's the point estimator being used, and maybe we may use a statistic like sample mean for estimating the population mean. Estimator की definition क्या है? तो estimator is a rule, so which is often expressed as a formula that tells how to calculate the value of an estimate. So it tells you how to calculate the value of an estimate based on the measurements contained in a sample. So generally हम लोग जो है एस्टिमेटर को क्या ले रहे हैं? एस्टिमेटर में हमारे पास अभी तक डेटा ऑब्जर्व नहीं हुआ. एस्टिमेटर हमारे पास फार्मूला है, एक स्टेटिस्टिक है बेसिकली, still a random variable, or it tells us, the formula tells us how to calculate the value of an estimate and using the measurements from the sample. So for example, using the mean or the median or maybe something else. So the key definitions are the parameter, which is often an unknown quantity computed from the population. Parameter, which is an unknown quantity computed from the population or the population distribution, for example mu or sigma square. Estimator of an unknown parameter is a sample statistic used to estimate the parameter, for example x bar or s square, sample variance or sample mean. An estimate is the value of the estimator after the data is collected. So estimate हम उस चीज़ को कहेंगे जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो चुका हुआ है और हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू आ चुकी हुई है. So that's what we call when we call it as an estimate. Before that the formula is called as estimator. So let's see an example. For example, here a mu missile is being tested and we want to estimate the probability of hit for that missile. For example, हमारे पास एक let's say drone है और कोई missile है that is to be used for hitting the drone, and we want to calculate the we want to calculate the probability of hit of that missile against this particular drone. So against a particular target under specific conditions हम देखना चाहते हैं, and we use 25 experiments, 25 shots हम देते हैं, 25 missiles fire करते हैं same settings में. So parameter जो हमने estimate करना है is pH or probability of hit, the fraction of hit out of 25 shots. And let the random variable x be the number of hits. जब हमने वो the 25 hits की तो 15 are actual hits and 10 are misses. Alright, so a reasonable estimator, and the estimator will be probability of hit hat is equal to the random variable x, that is the number of hits, divided by the total number x divided by n, and the estimate after the data has been calculated is 15 by 25 or 60%. एक और example, let's say हम estimate करना चाह रहे हैं mean time to failure. So it's mean we are trying to find out of a piece of electronic equipment. Let's say it's your cell phone. So let's say हम 10 identical cell phones को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उनका mean time to first failure जो है let's say वो क्या आता है. So let's say in thousands of hours cell phone number 1
हमारे पास 5000 आवर्स में फेल हुआ cell phone number 2, 5000 hours, 21,000 hours cell phone number 3, and same way the cell phone number 10 is in 36,000 hours में जाके फेल हुआ. So what we want to do is to estimate the mu or the mean time to failure, and let's see how best we can do this thing. So here are some of the possible estimators for mu and their values for this data set. So one of the estimator for mu can be mu hat is equal to x bar or the sample mean. अगर हम sample mean को estimator लें अपना तो x bar की value जो है estimate जो है वो आता है 24.9 using this formula which you are very much familiar with. Yet another point estimator, and somebody else can claim that okay, instead of using sample mean I will use the median of the sample. ठीक है? So if that be the case, तो फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? So what we can use is x tilde. So x tilde जो है वो सैम्पल का मीडियन है. So सैम्पल मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 29. Somebody else, third person can come in and he says, no, my point estimator is simply the average of the minimum and the maximum value. So the minimum observable value is 5,000 hours. The maximum observable value was 36,000 hours. I'll simply average them and my estimate comes out to be 20.5. And yet another fourth person comes and he says that I will take a truncated mean. I will simply take 8 values. I will simply reject the first and the last, the minimum and the maximum values, and take the mean of the rest 8 values, and my estimate is 26. So the problem is, or the issue is कि ये सब के सब estimate करने के लिए use हो रहे हैं mu, right? They all are mu hats. So which estimate is the good one, or which estimate should we use? So we will use the one which is closer to the true but unknown population value. So our main focus is कि हम वो वाला use करेंगे which one is giving us the closest to this actual mu. And which one is that? Actually, we don't know because we don't know mu. So there are ways to find that thing out, and let's see how we can do that. एक और example, हमने पहले mean की example देखी. Let's see, we want to have, you want to estimate the variability here. So it's a computer simulation experiment, and for 10 scenario runs, we found out that the first scenario run, the simulation completed in 44.2 seconds, and the next it completed in 43.9 seconds, and yet another it completed in 44.7 seconds, and same way up to the last 8th simulation run. So जो एस्टिमेट करना है हमने कि इसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है और सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन में कितना है. सो वन वे इज़ आवर सैम्पल की जो वेरिएंस है विच इज़ डिनोटेड बाय एस स्क्वायर. द फार्मूला हैज़ 1/n-1 sigma of xi minus x bar whole square. So this one seems a little bit odd. We've been using this before, but looks odd because यहाँ पे तो सब के सब n values जो हैं वो हम subtract करके उनका average उनको हम sum up कर रहे हैं, but we divide them, instead of dividing them by n, we simply divide them by n-1. So with this method, our sample variance comes out to be 0.25.
But somebody says that instead of this, I will simply use 1 over n. I will not use 1 over n minus 1, I will use 1 over n. So as per his calculations, the estimate of population variance comes out to be 0.22. So which one to use for sigma square, to estimate sigma square? Why to prefer the first over second? So the key idea here is कि हम वो वाला एस्टिमेटर यूज़ करेंगे जो कि हमें लॉन्गर रन में, सो दिस इम्पॉर्टेंट, लॉन्गर रन में बेहतर बिहेवियर शो करेगा. एस्टिमेटर को हमेशा उसके किसी पर्टिकुलर केस के लिए हम नहीं जज करते, रादर वी जज इट फॉर इट्स लॉन्ग टर्म बिहेवियर. ओके, लॉन्ग टर्म बिहेवियर का मतलब ये है कि हो सकता है इन अ पर्टिकुलर केस जब आपने सैम्पल इकट्ठा किया फ्रॉम अ पॉपुलेशन, आपका सैम्पल इस तरह इकट्ठा हुआ कि और उस केस में लेट्स से आपको म्यू जो है वो पता है. और जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने एक सैम्पल इकट्ठा किया फ्रॉम दिस पॉपुलेशन और लेट्स से उस सैम्पल से लेट्स से जब आपने सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इन वन इज़ जिसमें 1/n और एक में 1/n-1 यूज़ हो रहा है. ओके, सो हमने फाइंड आउट किया कि लेट्स से जो ओरिजिनल है लेट्स से कि वो हमें नोन है, और जब हमने इस फार्मूले का यूज़ किया, उन दोनों फार्मूलाज को यूज़ किया, तो इस सैम्पल में वी फाउंड आउट that this one is closer to this one, while this one is not very closer to mu. In another sample, it comes out okay, this one is closer to mu and this one is not closer to mu. Okay, so because the way sampling is being done, or the way the sample, अगर random sample है, जिस तरीके से उसमें values आ रही हैं, एक पर्टिकुलर केस के अंदर हो सकता है हमारा जो भी लेट्स से दिस इज़ द ऑप्टिमल एस्टिमेटर, हम जज कर चुके हैं, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल एस्टिमेटर फॉर फाइंडिंग आउट द सैम्पल वेरिएंस और द पॉपुलेशन वेरिएंस. सो बट डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर डेटा सेट और द पर्टिकुलर सैम्पल, हो सकता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में ये जो है बेहतर बिहेवियर ना शो करे, बल्कि ये बेहतर बिहेवियर शो करे. दूसरे केस में हो सकता है ये बेहतर बिहेवियर ना शो करे, ये बेहतर बिहेवियर शो करते हैं, तीसरे केस में कुछ और. सो वी आर नॉट जजिंग दैम बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर इंस्टेंट, rather we are judging them based upon their long-term behavior. Okay, so we are saying that in the longer run, the optimal estimator will tend to be closer to the unknown parameter than the other approaches. So if there are many samples taken, so the one which is optimal will be closer to the mu rather than the other. हो सकता है particular case में this one goes closer to the mu, but for the longer behavior this one is more closer to mu, the optimal one is more closer to mu than the other. So that's the key idea of judging which estimator to prefer and which not. So this is the idea behind bias. So bias क्या चीज़ है? Bias ये चीज़ है कि उसको define ऐसे करते हैं कि let's say theta hat जो है वो point estimate है for theta जो भी है. थीटा हैट को हम अनबायस्ड एस्टिमेटर कहेंगे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट जो है इट इज़ इक्वल टू थीटा. अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट जो भी हम उसको फाइंड आउट करते हैं, इफ़ इट कम्स इक्वल टू थीटा वी कॉल इट अनबायस्ड एस्टिमेटर. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू थीटा वी कॉल इट
biased estimator. So that's the basic definition. The bias of a point estimator is given by bias of theta hat is equal to expected value of theta hat minus theta, right? So this is the example. Let's say ये दो PDFs हैं, PDF of theta 1 hat and PDF of theta 2 hat, and let's say ये जो है this is the actual theta. So the way the expected value of theta hat 1 is here. So this distance shows the bias of theta hat 1. In this case, let's say this is the theta and this is the PDF of theta hat 1. So this indicates the bias of, this distance indicates the bias of theta 1. So let's do some exercise or some proofs for proving the unbiasedness. So the proposition is that let x be a binomial random variable with parameters n and p. Okay, so x should have it is binom n p. The sample proportion p hat is equal to x by n is unbiased estimator of p. Okay, so this is our proposition कि अगर हम p hat जो है हमारे पास जो sample proportion, so it's the unbiased estimator of p, the proportions of population. Okay, so let's do this by hand. So what we need to show is what we need to show is p hat is unbiased estimator of p. तो जो definition हम पीछे देख चुके हैं कि अगर it has to be unbiased estimator, so उसके लिए ज़रूरी है कि expected value of p hat should be equal to p, right? So if this is the case, then it would be an unbiased estimator of p. So let's see p hat की expected value जो है वो हमारे पास वो क्या है? So estimated expected value of p hat would be equal to expected value of x by n. So expected value of x by n, ये कहाँ से आया? ये it is from here, which is equal to n is a number, and while x is a random variable, so it will be 1 over n, expected value of the x, right? So expected value of x क्या है? Expected value of x हमने define क्या है कि it's a binomial random variable. So binomial random variable के case में expected value of a binomial random variable is equal to n times p. So it means 1 over n, and this would be n times p, and it comes out to be p. All right, so expected value of p hat comes out to be p. So it means that p hat equals x, random variable x divided by n, is actually an unbiased estimator of p. नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल, और इस एग्जांपल में बेसिकली हम वो चीज़
जो है देखेंगे जो कि काफ़ी अरसे से हमारे सामने आ रही हैं, एंड दैट इज़ why do we have 1 over n minus 1 in the calculation of samples variance. So let y1, y2, yb, yn be the random sample with expected value of yi to be mu and variance of yi to be sigma square. You need to show we have called it s dash square, s dash, the छोटी सी dash लगी हुई है, we not call it s square is equal to 1 over n sigma yi minus y bar whole square is a biased estimator for sigma square, while s square is an unbiased estimator because s square के अंदर 1 over n minus 1 sigma yi minus y bar square I equals 1 to n. So we need to show कि ये unbiased है, and we need to show that this is biased. So इसके अंदर basically जो important चीज़ है वो यूज़ करने वाली वो ये है कि ये वाला जो formula है expected value of y square is equal to variance of y plus expected value of y whole square. This will be utilized. Because ये कहाँ से आया, हमने पहले देखा था कि variance of y would be equal to expected value of y squared minus expected value of y whole square. ये आपने जब expected value of variances जब देख रहे थे उस टाइम पे ये चीज़ जो है ना हमने पढ़ी थी. So we will use the same thing here in this manner. और एक और चीज़ जो हम यूटिलाइज करेंगे वो ये है कि s square, so this is one that will be used, and the other thing we'll use is s square will be is equal to 1 over n minus 1, and we'll use it this way: sigma I equals 1 to n yi square minus 1 over n sigma yi whole square. So this is what we are going to use in the light of this thing. All right, इसको जो है यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, इसको अब हम इस फॉर्म में जो है यूज़ करेंगे. So let's see what comes out. So expected value of s square हमने find out करनी है, that is equal to expected value of 1 over n minus 1 sigma yi square minus 1 over n sigma yi whole square right is equal to 1 over n minus 1 constant है, बाहर आ जाएगा. हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1 over n minus 1 को यहाँ पे, and automatically 1 over n जो है वो rule out हो जाएगा. Expected value of, so हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि instead of sigma जो है वो बाहर आ जाएगा, it will becomes expected value of yi square minus 1 over n
expected value of sigma yi whole square that is equal to 1 over n minus 1. So ये ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसको यहाँ से लिखते हैं, is equal to 1 over n minus 1 sigma variance of yi plus expected value of yi whole square. ये हमने वो फार्मूला यूज़ किया जिसको हमने नंबर 1 कहा था, माइनस 1 over n variance sigma yi plus expected value of sigma, so this is expected value of sigma yi square one over n minus 1 sigma, so this is sigma y square variance minus plus sigma y square plus mu y squared minus 1 over n variance of sigma yi, so sigma yi plus sigma expected value of yi whole square. This comes out to be 1 over n minus 1. So this would be sigma to s, a simple n times yi square, sigma y square plus n mu square y minus 1 over n. This would be variance of sigma yi को हम लिख सकते हैं से, इस चीज़ को हम यहाँ पिछले स्टेप में कर सकते थे, variance sigma, so n times sigma y square, ये भी हो जाता है, plus this is also n times, this one is n times mu y or square, so 1 over n minus 1 n sigma y square plus n mu y square minus, this would be sigma y squared minus n mu y mu squared y. Okay, so n mu square y or n mu square y ख़त्म हो जाता है, and here it will be equal to
1 over n minus 1 sigma y squared, जो कि आपके पास आ जाता है सिग्मा वाई स्क्वायर. सो जो n minus 1 वाला है आपने ये देखा, that comes out to be sigma y squared. It means it is unbiased. इसका मतलब ये है कि अगर ये n minus 1 वाला हम यूज़ ना करते, हम s dash स्क्वायर वाला यूज़ करते हैं. सो s dash स्क्वायर जो है बेसिकली जिसके अंदर 1 over n की टर्म यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ 1 over n minus 1. So that would be biased, because we have just shown that the one which uses 1 over n minus 1, उसकी expected value comes out to be exactly sigma y squared. So that means it is unbiased. It means कि s dash square जिसमें 1 over n की values होती है, यहाँ पे 1 over n होता, तो it would not have come out to be sigma y squared. So s dash square जो है, so it underestimates s squared, or so sigma y squared in long run, or you can call it on average. So it is biased, while s squared is not biased. ये वाला formula जो हमने अभी यूज़ किया, this is for your consumption, just to prove this thing and to know कि biased or unbiased estimators कैसे find out करते हैं. This formula और ये चीज़ें जो हैं हम लोग, they are not for the consumption of examination, they are basically for your understanding and practice. So one criteria for choosing among the estimators is the principle of minimum variance and unbiased estimation. So जितने भी estimators हैं that are unbiased, अगर जितने भी estimators let's say of theta किसी एक particular पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए हम लोग जो भी जितने भी एस्टिमेटर्स लेंगे और वो सारे के सारे लेट्स से अनबायस्ड हैं, सो वी विल चूज़ द वन दैट हैज़ द मिनिमम वेरिएंस, राइट. सो अमंग ऑल दोज एस्टिमेटर्स जिनके अंदर ये टाई है कि सारे के सारे अनबायस्ड हैं, तो वो वाला एस्टिमेटर हम यूज़ करेंगे जो कि which has minimum variance, right. So this is one of the principle. So the resulting estimator theta hat is called the minimum variance unbiased estimator, or MVUE of theta. So इस तरह से है कि theta और theta 1 hat और theta 2 hat दो estimators हैं for theta, और वो दोनों के दोनों जो हैं basically वो unbiased हैं because they all have the same mean. However, theta 2 hat has a bigger variance, ज़्यादा स्प्रेड है एज़ कम्पेयर टू थीटा 1 hat. सो इसका मतलब है कि MVUE जो है हमारे पास बेसिकली वो थीटा 1 hat है. It has less variance or minimum variance unbiased estimator. So the example is, let's say let x1 to xn be the random sample from a normal distribution with parameters mu and sigma. Then the estimator mu hat is equal to x bar is the minimum variance unbiased estimator for mu. The proof is beyond the scope of this class, but if it is a normal distribution, then mu hat is equal to x bar is preferred because it is MVUE for mu. However,
Please note that this applies only to the normal distribution, because when estimating the population mean for other distributions, x bar may not be the appropriate estimator. For example, for Cauchy distribution, expected value of x is equal to infinity, right? So expected value of x, if it is infinity, so here x bar cannot be used as MVUE. So it's an extreme case. So this holds good for, it is MVUE for normal distribution only. Next, to find out कि हमारा पॉइंट एस्टिमेट कितना वेरिएबल है, जैसे हमने कहा कि मिनिमम वेरिएंस वाला हमने निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसकी वेरिएंस कितना वेरिएबल है. सो to find out the variance or the variability of our point estimate, we use the standard error. So the standard error is basically the variability of point estimate. It's the method of finding the variability of point estimate. And the standard error of an estimator is its standard deviation. Simple. So this is the standard error of an estimator, and this is simply the variance square root. So if the standard error itself involves unknown parameters, so if the standard error itself involves unknown parameters whose values are estimated, substitutions whose values are estimated, the substitution of these estimates into sigma hat yields the estimated standard error. So estimated standard error is denoted by S theta hat or sigma hat theta hat. Okay. So अगर standard error कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर भी आपके पास वैल्यूज़ एस्टिमेटेड आ जाती हैं, तो we'll call it as estimated standard error. एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं कि let's say एक air-to-air missile है, it hits 16 out of 21 targets. So to provide an estimate for the probability of success, or probability of hit, and an estimated standard error. So p hat जो है वो simply आपके पास आ जाता है number of successes by trials 0.762. Standard error जो है वो आपके पास sigma p hat जो है वो pq divided by n है, और estimated standard error जो है basically आपके पास आ जाता है p hat q hat divided by n, because ये एक binomial है, so that's why we are using this one, this formula. So standard error का formula दिया है, लेकिन चूँकि p और q भी जो हैं सारे के सारे estimate हो रहे हैं, so estimated standard error जो है हमारे पास इस तरीके से p hat और q hat यूज़ करके डिवाइड बाय n करके हमारे पास 0.093 आ जाता है, और therefore p hat plus minus 2 standard deviation is this much. फिलहाल हम लोग this is a point and this is our interval. कुछ कॉमन स्टैंडर्ड एरर्स और एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं. Let's say y1 to yn are distributed IIDs with the variance sigma square. Then for sample size n, the variance of y bar is equal to sigma square over n. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था. y bar जो लास्ट लेक्चर के हमने देखा था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, उसके अंदर हमने देखा था कि वेरिएंस जो है वो
if they are IIDs. So for sample mean, y bar is sample mean, so variance of y bar would be sigma square divided by n, और जो sigma है, sigma y bar in standard deviation is sigma divided by the square root of n. So जो हमारे पास standard error है, sigma hat y bar would be equal to s divided by square root of n, because s is the sample mean standard deviation or square root of n. So this will be the standard error अगर हम mean sample mean को जो है हम estimate करना. If y is binomial random variable, then the standard error जैसे हमने last example में use किया would be this. So expected values and standard errors of some common point estimators यहाँ पे define किए हमने. So target parameter अगर mu है, sample size n है, point estimator is y bar, and expected value of theta hat is mu, and the standard error is given by sigma divided by square root of n. If it is p proportion, then standard error is pq by n square root. If it is populations are independent and we want to find out the target parameters, the difference between the mean of two populations, then it is given by this formula, and if it is the difference between the proportions, then it's given by this formula. So however, unbiased estimators एक point है कि and they are not always to be preferred. Sometimes an estimator with a small bias can be preferred to an unbiased estimator. Estimator with a small bias can be preferred over an unbiased estimator. Why? Because let's say this is unbiased, but it has a bigger variance, or unbiased and it has minimum variance. Now this one is biased, okay, because this one is biased, but the variance is much smaller than the MVUE. So in these cases, the biased estimator theta 1 hat would be a preferred choice over the MVUE. So more detailed discussions are beyond the scope of this course. So just know, and this is the important thing to know, is that unbiasedness isn't necessarily required for a good estimator. It's good if there are two estimators. If the MVUE has the minimum variance than the other biased estimators also, then definitely we will choose that one. But if a biased estimator, but with small bias, it has a very small bias, and also it has a less variance, so then the MVUE, then it might be a preferred choice. The other thing is estimators के लिए जो हमने criteria देखा था वो mean square error है. Mean square error को हम define करते हैं point estimator का by estimated mean squared error is theta hat minus theta whole square expected value. So mean square error of an estimator is function of both its variance and its bias. So let's cut this out. So it can be shown that the mean square error of theta hat is equal to variance of theta hat plus bias of theta hat whole square. So for unbiased estimator, mean square error of theta hat is simply equal to the variance of theta hat for unbiased estimators only, because unbiased estimator के case में the bias would be 0. So that's why for unbiased estimators the mean square error of theta hat would simply the variance of theta hat. However, general formula is the mean square error of theta hat is equal to
the variance of theta hat plus the bias of theta hat whole square. ये फार्मूला भी जिस तरह से हमने जो भी पीछे बाइसनेस को चेक करने के लिए फार्मूला यूज़ किए थे फॉर sample standard deviation, sample variance, ये उसी जगह से हमने यूज़ किया. The picture is worth 1,000 words. So picture से आपको biasness और variance का बहुत अच्छा अंदाज़ा होगा. This is a target. अगर हम लोग इसमें देखें तो if this is sorry. So this one, the target is here, but there's a group of all the there's a group which is biased from the center, but it's in the form of a closed group. So it means the variance is very low, but the bias is really high. Here, all are surrounded, or all are distributed around the mean value, so it means they have a low bias. But since they are all distributed quite a lot, so the variability is quite high here. In this case, not only that it has a high bias because here the mean is, it also has a very high variability. And in the last one, this is the one where we have both low bias and low variability. So this is the one which is the most desired one. So this will be the best one to be used. If we are able to get this. So this one is the worst, while this one is the best. So this was the key idea that we discussed before, that estimator is usually judged by its long run behavior. That is how it performs repeatedly over time. So let's do an example. So in a sample of 1,000 randomly selected voters, y is equal to 560 are in favor of a candidate whose name is Jones. So we need to estimate P, the fraction of voters in the population favoring Jones, and put a 2 standard error or estimated error standard error bound on the error of the estimation. Right. So how we are going to do this? The logical estimator is P hat equals y over n, which is equal to, so this is the estimator, and the estimate is going to be 560 over 1000, which is 0.56. So this is our estimate, the fraction of the voters in the population favoring Jones. The next thing we have to do, we have to put a standard error, 2 standard error or the estimated standard error bound. So bound के लिए हम ये करेंगे, the bound is 2 sigma p hat, which is equal to 2 p times q times n, which is approximately equal to 2 p hat q hat divided by n, which is same as 2 p hat is 0.56, q hat is 0.44 divided by 1000, which is
comes out to be 0.031. So this is our bound. So bound हमारे पास टू स्टैंडर्ड एरर का जो बाउंड इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा था. So input a two standard error or estimated standard error bound on the error of the estimation. So that comes out to be 0.56, 0.031. So it would be 0.56 plus minus 0.031. What are the other properties of good estimators? So जो good properties हैं good estimators की कि unbiased estimator is more efficient than another if it has a smaller standard deviation. One estimator is robust if it is not sensitive to outliers and the distributional assumptions and the data entry errors. So अगर एक estimator बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा आउटलायर्स या डेटा एंट्री एरर्स के लिए इन बहुत जल्दी परटर्ब नहीं हो जाता, स्मॉल परटर्बेशंस जो हैं उसको अफेक्ट नहीं करती. So we call it that it's a robust estimator. So it's also a very good property to have in a lot of things, but also for point estimators. So it means that the robust estimators work reasonably well under a wide variety of conditions. So robustness is a very good and required, maybe it's desired quality. An estimator is consistent if for all epsilon greater than 0, if the probability of theta hat minus theta is greater than epsilon tends to be 0 as n goes to infinity. So अगर हमारे पास the difference के theta n hat minus theta absolute value यानी कि estimate minus the original parameter value. So as n goes to infinity, the probability that this thing is greater than epsilon if it goes to 0 कि epsilon से greater होगा if that probability goes to 0 as n goes to infinity. N goes to infinity का मतलब यह है कि we are going towards the population size. So we call it a consistent estimator. So इसकी details जो हैं they are beyond this course. So lastly, what we covered on the properties of estimators. So we define and distinguish between point estimates versus point estimators. So this was a value and this was a formula or statistic. Discussed the characteristics of good point estimates. They were unbiasedness, minimum variance, mean square error, consistency, efficiency, and robustness. And we quantified and calculated the precision of an estimator via the standard error. So this is all what we covered in today's lecture, and hopefully you understood all. Thank you very much.